हेलो एवरीवन, दिस इज CACS स्पर्श Dodani this side and yes, अब हम तैयारी चालू कर रहे हैं फाइनली अपनी IBS नवंबर 26। IBS May 26 पेपर was very good as compared to January 26 paper was comparatively easier to approach, but हाँ, at the same time it was lengthy. But the thing is ना, you don't have to predict the paper now. अब वो आपको वो सब चीजें बंद कर देनी चाहिए IBS में कि पेपर डिफिकल्ट आएगा, इजी आएगा, लेंदी आएगा, because there will be one and another thing. If it is easier to approach, the paper will be lengthy. If it is difficult to approach, the paper may not be that lengthy. So that's the case maybe. And now this video is specifically for the students. दोनों ग्रुप वाले भी देख सकते हैं, बट स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा फॉर द स्टूडेंट्स वो अपियरिंग फॉर ओनली ग्रुप टू, जिनका ग्रुप वन शायद बहुत पहले हो चुका है या फॉर सम रीजन अभी वो ग्रुप वन अपियर नहीं कर रहे हैं। राइट, चलो, तो मैं आपको बता दूं क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है फॉर IBS इन नवंबर 26, स्पेसिफिकली इफ यू अपियरिंग फॉर ग्रुप टू या बोथ ग्रुप्स भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, देखो, लेट मी टेल यू दिक्कत क्या है, मैं आपको बताऊं। द मेन इशू दैट स्टूडेंट हैज, वो अभी भी मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात करता हूँ, दे ट्रीट IBS एज एन जस्ट अनदर ओपन बुक, जैसे उनका पहले हमारे इसमें था, लाइक जो 60 6A 6B द पेपर दैट वर वेरी इजी कंपेयर टू IBS। डोंट ट्रीट इट एज एन ओपन बुक, ऐसा आपको मत मानो इसको ओपन बुक, ट्रीट इट एज वन ऑफ योर सब्जेक्ट्स इन ग्रुप। जैसे आपका DT है, IDT है, मैं बार बार ये बोलता हूँ, as you treat your DT, IDT, treat IBS in the same way. Prepare IBS in the same way. You have to give it time. ऐसा नहीं हो सकता कि यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर DT, IDT और एकदम से फिर एग्जाम के आप पहले या कुछ समय पहले आप जाग जाए एंड देन हैव टू प्रिपेयर फॉर IBS। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। मैंने काफी सारे लोगों से बात की, द पीपल हु हैव गॉट गुड मार्क्स इन May 26, कुछ ऐसे भी थे हु हैड माय बुक्स, तो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो गया उनसे। So I got to know that they prepared IBS like any other subject. Like they would have prepared FR, AFM, audit, law or SCMP. So chalo, they are in your SPM, which will be a point ahead. So treat IBS as it is one of your subjects that you're preparing for. जो आपकी बुक्स है, एक और गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं, बुक को कंपेनियन नहीं मानना है आपको। बुक इज नॉट द सोर्स इन द एग्जामिनेशन। दैट विल बी द बिगेस्ट रोड ब्लॉक, द बिगेस्ट बॉटलनेक फॉर यू। बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा इफ यू डोंट नो व्हाट थिंग्स, वेयर द थिंग्स आर एंड हाउ टू अप्रोच देम इन योर एग्जामिनेशन। ये भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जा रही है दैट दे नो द टॉपिक, they know where will they find that topic in the particular module or notes or whatever the case may be, how to approach that topic, how to frame answer from that topic. That is also one. So use your books as decision engine, sir। इसका मतलब क्या हुआ, sir? You don't have to you don't have to use your books as a source of knowledge. It is, but not in that those 4 hours of your examination. You don't have to treat them as your source of knowledge. You have to treat them decision engine. If this happens in that particular case study, what I have to do, how I have to approach, what things I need to write in my paper. That is how you need to treat your books, not just simple knowledge dump, right? Like you found this, you found the answer, you are writing, ऐसे नहीं चलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने इंटरेक्ट किया है who found the topic, who wrote the answer but still got 38 40 40 45 marks. And honestly, I think you can score well in IBS, but you need a good strategy. You need good preparation for that. And specifically, if you are a group two student, that will be difficult for you. I can see there's a students who are appearing for both groups have a good hand over you, and like they probably एक average अगर देखा जाए तो the students appearing for both the groups score usually good in IBS. But इसका मतलब ये नहीं है कि if you're appearing for only group two you cannot score good in IBS. That is not the case. You can score exemption in IBS. But वही चीज है, use books as your decision engines. Mark everything. If this happens, what will it trigger? Think about the second order, third order effects. If this happens in the case study, what will be the scenario? If this happens in the case study, what will be the scenario? How it will come through practice. Practice case studies, see scenarios, what is happening and how institute is framing the answer. That you have to look for. You don't have to just look for the topics. You look for the outputs. How the institute is framing answers for that particular topic, how institute
it using that topic for that answer. That is much more important, right? You don't have to just like understand topic and then you will apply. It's okay. It's good. But at certain point of time, if you need good marks in IBS, you need to be well equipped with the methods of institute, how they are framing answers from a particular topic. That is actually very important. How they are approaching a particular topic in a case study and how answers are being framed in the suggested answers, MTPs, RTPs, whatever the case may be. How they have framed the answers, what approach do they have, because ultimately your paper is going to be checked by a suggested answer list. Yeah, the suggested answers, whatever the case may be. Yes. And mm, like if even if you know the topic, the proper framing of answer is very essential. So that's why I'm saying use the book as decision engine. And this will save you a lot of time as well. You know the topic, you know what decision I have to take if this happens in the case study. Basically, you are an analyst in the examination. They are giving you few case studies like a consultant. So you have to suggest, analyze, comment. That's what you have to do. So on the basis of that, if you have those ready and if you have those marked, it will be much easier for you to like find the topic. That's the first case. Then curate your answers on the basis of what the case study is demanding from you, right? Do not explore. Do not explore. That doesn't mean ki you don't have to explore topics. And do not explore in the examination. Do not explore for topics like क्या ये हो सकता है, ये क्या ये इसका हो सकता है. I know confusion will be there. There will be few things that will be new for you. That will happen. But you don't have to waste your time exploring the modules or whatever subject material you are taking. Do not explore. Have it structured, have it marked, make things easier for you. See, everything in business, in examination, in your studies, everything, the better the structure is, the better the output will be. That is the simple scenario. And that is how you have to prepare for your IBS. And coming to my next point, FR and SCMP are the game changers. So why I'm saying that? Not because they cover a lot in your paper and they might cover. I do not believe in ABC and all this for IBS because we don't know कि इंस्टीट्यूट कब कहाँ से क्या टॉपिक पूछ ले. राइट, तो एबीसी और ये सब तो ठीक है. जैसे लेट मी टेल यू, अगर मैं एबीसी आपको बताऊं, इंडिया 36 जो आपका इम्पेयरमेंट है, अभी तक जितने भी आपके एग्जाम्स हुए हैं सब में आया है वो. और बहुत सारे टॉपिक्स है. एएफएम का आपका कॉर्पोरेट वैल्यूएशन का जो है उसमें सब में आया है वो. फिर वो एबीसी में आ गया नहीं, बिकॉज वी डोंट नो कि इंस्टीट्यूट कब क्या पूछ ले. बट एफआर एंड एससीएमपी गेम चेंजर्स में आपको क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज इफ यू प्रिपेयर देम वेल ना, तो यू हैव एन एज टू गेट एन एग्जामिशन. ये मैं मान सकता हूँ. बिकॉज डीटी आईडीटी एनीवेज यू आर प्रिपेयरिंग गुड. आई हैव फुल फेथ इन यू कि आप बहुत अच्छे से उसकी तैयारी कर रहे हो. कोई भी अगर डीटी आईडीटी का आएगा, 90% कॉन्फिडेंस के साथ यू विल अप्रोच इट एंड यू विल राइट फेयर आंसर्स, गुड आंसर्स, इन विच यू विल गेट 70-80% ऑफ द मार्क्स. उतना मैं मान के चल रहा हूँ दैट यू आर मच मोर केपेबल, राइट? But FR and SCMP are the game changers because in this scenario, if you prepare FR and SCMP well, you have a good chance of getting an exemption. But sir, again, that point, I'm appearing for group 2 only. चलो SCMP तो ठीक है, आपका SCM SPO में आ जाता है. What about FR? क्या करना चाहिए FR के लिए? सर देखो, मॉड्यूल बहुत ज्यादा लेंदी है ICAI का. अगर आप फिर से उससे पूरा पढ़ने जाएंगे, that might take a lot of time. I'm not discouraging you to do anything. You can do that, but it will be time consuming. You can watch revision videos of faculties that have uploaded on YouTube. वो काफी एक अच्छा अप्रोच हो सकता है. उसमें आपके टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे. ना इफ यू आर समवन जो बहुत शायद पहले एफआर आपने पढ़ा है और अभी, या बहुत पहले आपने एफआर दिया हुआ है, अभी शायद आपको टॉपिक्स उतने ब्रश अप करने से भी अगर अच्छे से नहीं समझेगा, यू शुड वॉच रिविजन वीडियोस. या फिर यू शुड हैव समरी नोट्स ऑफ एफआर, बट उसमें देन अगेन यू हैव टू डू मार्किंग्स एंड एवरीथिंग. सी, whatever you are studying for IBS, do the markings. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
structured approach is the right way to go for IPS. All the books scattered in your examination hall, trust me, that will be a liability. That will be a liability in your examination. Just flipping pages, finding topics, and everything that takes a lot of time. That takes a lot. And if you're this is your first attempt for IBS, and I know that students have must have told you this, but I'm telling you this, it is a very time consuming process where you flip through pages and find answers. The 4 hours that you get are not enough. And that's what I saw in everything, the inaccuracies and all. And now what I have prepared for you is the IBS 360. सर मैं ये अभी आपको बस just to tell you what I've prepared, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इसमें इस बार. I'm telling you, sleepless nights and everything, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, but I am sure that this will be worth it. So what we have done, we have taken all the topics from module. We have specifically curated all the topics from module. Then after that, we have summarized them in a way that it is easier for you to understand and also write answer in examination. Earlier, what we used to do, we used to just condense the topic. Now what we have done, we have summarized the topic in a way that will be easier for you to write your answers in the examination. So एक ये चीज हमने इसमें चेंज की है. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट आई हैव इंक्लूडेड, द की इनसाइट्स, एग्जाम ट्रैप, सर ये पहले भी था मुझे पता है. The what I have included is this. The decision engine is in the book itself, what you have to do. And apart from that, the module illustrations for your topic, which I feel are good. And हमने देखा है कि directly module illustration से भी question पूछे गए हैं अभी तक exam में. What we have done is we have included the module illustration for your better understanding and to help you solve the questions in examination. सर दोनों चीज में ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. इफ यू आर अपेयरिंग फॉर ग्रुप 2 ओनली, ग्रुप 1 के अगर आपको टॉपिक को ब्रश अप करना है तो दैट इज दिस बुक विल बी अ वेरी हेल्पफुल थिंग फॉर यू, बिकॉज सब इसमें हमने इलस्ट्रेशन, वर्कड एग्जांपल्स. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी हैव डन, द केस स्टडी Q&A जो अभी तक पूछे गए हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस है, वो हमने यहाँ पे डायरेक्टली आपको इंक्लूड कर दिए. एंड द केस सिनारियो, सर ये जो है ये थोड़ा सा अभी तक अनटैप्ड रहा है, स्टूडेंट्स भी नहीं देखते. ICAI ने केस सिनारियोज बनाए हैं हर सब्जेक्ट के लिए. वी हैव इंक्लूडेड देम एज वेल सब्जेक्ट वाइज. जो जो केस सिनारियो है सीधा सीधा आपको MCQ मिल जाएगा. दिस बुक विल बी सो मच हेल्पफुल. मैंने इसको इतना प्रेस करके देखा है. दिस बुक इज समथिंग एल्स. बहुत ज्यादा मेहनत लगी है एंड आई होप दैट इतना ज्यादा जितना ये मेहनत इसको बनाने में लगी उससे ज्यादा आपको ये हेल्प करे एग्जामिनेशन. सो ऑल दैट यू कैन डू बाय योर मॉड्यूल एंड एवरीथिंग, और यू कैन गेट दिस बुक एंड आपको ये भी ज्यादा जो चीजें हैं वॉट एवर आई सेड, ये शायद इसमें आपकी पूरी कवर हो जाए, राइट. एंड दिस बुक इज अवेलेबल as of now for pre-order. You can pre-order the book. जुलाई फर्स्ट वीक या जुलाई सेकेंड वीक में ये बुक की हम डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे मोस्ट प्रोबेबली. एंड आफ्टर दैट आपका जो भी चीजें हैं, योर केस स्टडी बुक एंड एवरीथिंग, वो सब तो है ही, आपको पता है. बट दिस बुक, द IBS 360, ICAI केस स्टडीज, ICAI मॉड्यूल इलस्ट्रेशंस, केस सिनारियो, टॉपिक्स, everything is there in one single book, right from your FR to IDT. That is something that will be very helpful in IBS. So go have a look. The book is available for pre-order on my website www.casparshadodani.in. The link will be in the description. Do check it out. And ऐसा कोई वो नहीं है कि I'm just selling you for this book, but मैं बता रहा हूँ that for the students जितने मैं interaction कर रहा हूँ, this is the solution that I thought is the most practicable solution for IBS as of now. एंड इसमें अगर और कुछ चीजें हमको लगेगा सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट अगर आपको देना है, वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू एज वेल. जैसे लास्ट टाइम वी प्रोवाइडेड द डिसीजन इंजन दैट प्रूव टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स, एंड इस बार वी हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग इन दिस बुक इटसेल्फ. और अगर कुछ लगता है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर IBS, वी विल ऑल्सो प्रोवाइड दैट. So make a structured approach for your IBS, prepare well, and treat it as a subject as other subjects as you prepare for other subjects. Right? On this note, bye, take care, and if this video is helpful, please do share with your colleagues or your friends who are appearing for CA final. Take care, and if you need any help, if you have any query, my Telegram is in the description. You can connect with me.